Good evening, all of you. Good evening, all of you. In the last lecture, we learned there is a classification of living organism. In that living organism, there is a bacteria, Monera. The Monera is there. Then algae is there, fungi is there. We see all these things. Now there is a last one topic is remaining from this lesson. There is a virus. This virus, from this virus name, we are so familiar now because in our whole world there is a one virus is so dangerous virus is come, that coronavirus is there. Means these viruses are so small, we cannot see our naked eyes, but some viruses are larger, we can see them with our naked eyes. Now there is a virus. What is this virus are there? These virus are the organism that age of living and non living. मतलब वो क्या करते हैं, लिविंग थिंग में जिंदा रहते हैं, बट व्हेन दे कम्स आउटसाइड ना, देन बिकॉज ऑफ द heat, because of the heat they die. But there is a so much different types are there. If some viruses, some bacteria are die within a few seconds, but some are die for 4 hours, otherwise 7 hours. This coronavirus is so dangerous because of these things, because that virus is die when any surface he fall na, that time 7 hours या 8 hours he alive, मतलब वो जिंदा रहता है 7 से 8 hours कोरोना वायरस. Because of that, that's why this virus is so dangerous. Now this where we did this all the viruses study, we did this all the viruses study in the microbiology. Now first of all, viruses are extremely minute. What is the meaning of minutes? Means they are tiny, so small, tiny. Their sizes are from 10 to 100 times smaller than the bacteria, and can be seen only with the electron microscope. But some virus we can see with our naked eyes also. They are found in the form of independent particles. मतलब वो independent particles रहते हैं, but they take the any host. They depend on any host. Means like a human being, otherwise the animals, otherwise plant. मतलब वो किसी ना किसी के सहारे जिंदा रहते हैं. Now these viruses are covered with the DNA and RNA proteins code. Now what is the DNA RNA? DNA means deoxyribonucleic acid, and RNA means ribonucleic acid. Now viruses are survive only in living plants and animal cells and produce their own protein with the help of the host cell. होस्ट सेल, मतलब वो हमारे जो बॉडी में रहते हैं, तो हमारे जो बॉडी के जो सेल्स रहते हैं, विद दैट हेल्प ऑफ दैट सेल they can prepare their foods, means proteins, and they can alive. They create the numerous replica, means they prepare their replica, means same same things, same organism like them, so much within a few seconds. मतलब कम seconds में वो अपने जैसे दूसरे जीव निर्माण करते हैं in our body. That's why they are so harmful for our body. They then they destroy the host cells. When they enter in our body na, then they prepare their protein cells and they destroy our host cell. वो मतलब हमारे cells वो destroy कर देते हैं, हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो उनके जो सेल्स है और उनकी जो रेप्लिका है उनको वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. इसलिए वो वायरसेस, दिस वायरसेस आर सो डेंजरस फॉर आवर बॉडी, because when this virus are enter in our body na, we are suffer from so many different types of diseases, like a common cold is there, influenza is there. Now there is a viruses cause the many diseases to plants and animal, and that viruses when for killing that virus we have to use that the doctors are use the anti-killer, means there is a anti-killers medicines are available in the market. Then we can kill that viruses, but there is a so much long period time is there. That's why so many vaccines are come to kill that viruses. Now for the coronavirus also vaccination work is going on, but the actual vaccine is not come now.
That's why whole world is in the trouble of because of the coronavirus. Now all of you, now we finish the lesson. All of you have homework. uh, what is the homework is there? You have to solve whole the exercise of this lesson. All of you understand? Yes, sir. All of you understand? Write Yes. all the question answers from this lesson. Okay, there is a exercise is given. The T diagram is there. Then there is a match the following is there, and the sixth question who I am. Only you have to write just answer there. Then draw the neat and label diagram. Neat and label diagram means you have to draw the diagrams and you have to give the name also. Otherwise, only you don't draw the diagram there. Okay. Now we are going to learn the next topic. There is a health and diseases is there. In Sir, case, next if you topic. don't find any answers, message us on the group. We will help you with those answers. Okay, but don't write half answers and just submit it. अगर कोई आंसर नहीं मिलेगा तो आप हमको रिक्वेस्ट करिए, हम वो आंसर्स आपको ग्रुप पे भेजेंगे. ठीक है? Yes. Okay. All Yes, of you sir. understand this lesson? Yes. Yeah. Now there is the second one lesson is there, and this lesson is so familiar with us. Means there is a health and diseases are there, and we know राजकुमार, everything about this. हाँ sir. स्क्रीन देख, अभी कुछ चेंज हुआ क्या स्क्रीन पे? हाँ, yes. The चेंज होता screen है ना? is changed now. Second lesson is there. Health नहीं, and right. diseases. What do you see right now on the screen? What happened? स्क्रीन पे अभी क्या दिख रहा है? Now there is second lesson is there. Okay, now. That seventh standard someone homework is there, but now I am not अभी कुछ नहीं दिख see रहा. that homework there. हाँ अभी नहीं दिख रहा है, पहले दिख रहा था. अभी तेरे को जब मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ तो स्क्रीन चेंज हो जाता है क्या तुम लोग के लिए भी? मेरे लिए होता है. अभी व्हाट्सएप दिख रहा है तेरे को? हाँ वो दिख रहा है. हाँ ठीक है, चल. ओके, चल ठीक है. ऑलराइट गाइस, कंटिन्यू. Okay, all of you now listen. Now we are going to learn the second lesson, health and diseases. Now health, what is the meaning of health and what is the meaning of diseases? We are familiar with this. Health means what is the health is there. In health there is a three things are come. Which one is there? Physical, mental and social. If we are stable, if we are balanced, our physical, mental and social balancing is there, then our health is a proper. Otherwise if we are mentally disturbed, then our health is not properly. Otherwise we physically disturbed, then our health is not properly. Means we are suffer from many different types of diseases. That's why mentally as well as physically and socially, if we are aware, otherwise if we are stand properly in these three steps, then we are healthy people. Understand all of you? Now if this if from these three things one is absent, then we are suffer from any different types of diseases. Now what is a diseases is there? Now diseases means there is a condition of disturbance in the physiological process of the body. मतलब हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है और उससे हमारे बॉडी का कुछ ना कुछ नुकसान होता है. देयर इज सो मच एडवांटेज इज देयर. दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजेस. नाउ देयर इज अ डिसीजेस इज देयर ना. Every diseases, so many diseases are there in our surrounding, but there is a different types of symptoms are there. Now there is a diarrhea is there. Then in diarrhea and in a common cold, the same in diarrhea and in a common cold there is a same symptoms are there? No, there is a different types of symptoms are there. Now there is a types of diseases. Which types of diseases are there? Now see, we are familiar with this common cold and flu is there. Now there is a diabetes is there, asthma is there, Down syndrome. Now Down syndrome is there. What is the meaning of Down syndrome? Now see, in our society there are white skin persons are there. What is the meaning of that one? There is a, they are in a red skin is there. They have red skin.
they look like a African, means they look like a मीन्स उनकी जो स्किन होती है ना वो व्हाइट होती है पूरी, और जैसे वो फॉरेन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ऐसे हमें लगता है, बट दे हैव दैट डाउन सिंड्रोम इज देयर। और वो डिसीजेस है ना वो हमें हेरिडेटरी होता है, मतलब जो अगर आपके पेरेंट्स को या मदर को या फादर को होता है तो वो हेरिडिटी से ही मिलता है उनके बच्चों को भी। Now there is a heart diseases is there. Heart diseases are happened because of there is a cholesterol are increase in our body. Then our heart is not proper. Our heart function is not do the properly. That's why there is a heart diseases is there. In heart diseases there is a two types of surgeries are there done. There is a angiography is there and angioplasty is there. In angiography we know how much blockage are there in our heart. To some means there is a how much blockage are there, blood blockage are there. Now there is angioplasty is there, means there is a one tube is there, that tube is fitted in that our blood vessels, and the bloods can move easily from so many different parts to heart. That's why the heart diseases, you know. Now there is the reason and symptoms of all these diseases are different. To bring the coordination in scientific study of the diseases are classified as follow. Now diseases, what is the how the diseases are classified? The diseases are classified into two types. There is according to the duration and according to the season. What is the meaning of according to the duration? Duration means how much type that diseases are spread and how much type their problems are created in our body. Now in that duration, according to duration, there is a two types of diseases are there. First one is the chronic diseases are there. Chronic diseases means these diseases is for so much long time. Now there is a acute diseases is there. Acute diseases we can recover within a 15 days, otherwise 1 month. But that chronic diseases are for long time, for 1 year or 2 years. Now there is a second one part is there according to the reason. Now what is the meaning of according to the reason? Means why these diseases are spread. Now hereditary diseases. The Down syndrome is a hereditary diseases is there. And acquired diseases. Which one acquired diseases? Infectious diseases and non-infectious diseases. Infectious diseases means if we come in infected person, in contact with infected person, then that diseases is spread everywhere. That is a infectious diseases. Now this coronavirus is also infectious diseases. If we contact with that infected person, then we are also suffer from that diseases. Now non-infectious diseases. Now in non-infectious diseases is the diabetes, heart diseases. In infectious diseases, common cold is there, flu is there, and dengue is there. नाउ कॉमन कोल्ड, अभी देखो हमारे घर में अगर किसी को खांसी सर्दी हुई तो उसके पर्सन के कांटेक्ट में अगर हमारे घर के दूसरे भी पर्सन आते तो उनको भी खांसी और सर्दी हो जाती है। तो इससे क्या बोलते हैं इन्फेक्शन डिसीजेस। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस मतलब डायबिटीज और हार्ट अटैक, हार्ट डिसीजेस। अभी हार्ट का डिसीज, हमारे दादाजी को हार्ट अटैक आया तो ऑब्वियसली वो तुरंत आपको 1-2 दिन में तुरंत आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है। मीन्स डिसीजेस में भी दो प्रकार है, कौन से है? अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू द रीजन। Now there is a one person is there, you can see in this picture, and he have suffered from there is a cough is there. When he coughing in the surrounding, that time so much droplets are settle on the ground, and that droplets contain so much bacteria like a tuberculosis bacteria are there, and because of that bacteria so much in that areas which was persons are present now, they are also suffer from that diseases. Now that's why there is a from government, when you are cough is there, then you have to keep your handkerchief on your mouth and you have to cough. Otherwise if you cough without a handkerchief na, then what happen, all the which one bacteria and viruses are there na, they can spread in a surrounding, and so much persons are infected because of that.
Now there is a one infectious diseases table is given. If we learn this table, then we know how these infection diseases are spread, and what is the infection, what is the symptoms of that diseases, and how to prevent them. Now there is a first one is the TB. TB means tuberculosis. This TB, the pathogen, what is the pathogens are there? Means pathogen means from which viruses and which bacteria these diseases are spread. Now there is a mycobacterium tuberculate, and there is a mode of nutrition means कैसे होता है वो, spitting by the patient through the air. मतलब अगर सॉरी कोई पेशेंट रहेगा, अगर वो सराउंडिंग में थूकता है, स्प्लिटिंग करता है, तो उसके जो सलाइवा होती है, जो स्प्लिटिंग रहती है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं. अगर वो बैक्टीरियाज हवा में हमने किसी खाने के ऊपर या हमारे हाथ को लगे, तो हमें भी वो डिसीजेस क्या हो जाता है, हो जाता है. नाउ सिम्टम्स, व्हाट इज द सिम्टम्स आर देयर? क्रोनिक क्लब मतलब आपको कम से कम 1-2 महीने खांसी हो जाएगी. ब्लडी स्प्लिटिंग मतलब आपके जो स्प्लिटिंग होता है उसमें से ब्लड आना चालू हो जाता है. And there is so much problems is there for the breathing also. Now how to prevent these diseases? Now there is a different types of vaccination are available in the market. There is a BCG vaccination is there. Isolation of the patient means isolation ward में वो patient को रखते हैं, and they use that ventilators also. Those have so much breathing problems, and they give that dots मतलब मेडिकेशन मतलब जो डॉट्स की दवाई होती है उसको दिया जाता है. नाउ द सेकंड वन इज द हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस मीन जॉइंटिस, कावीळ, त्याला काय म्हणतात, कावीळ. हेपेटाइटिस virus is ABCDE, means there is a 5 types of hepatitis is there. Now why this hepatitis is the spread everywhere? बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब गंदा पानी पीने से बारिश में सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस के पेशेंट मिलते हैं, क्योंकि बारिश के बाद क्या होता है, बहुत सारा पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है. इसके कारण सो मच पेशेंट्स आर कम ऑफ हेपेटाइटिस. शेयरिंग ऑफ नीडल्स, मतलब एक दूसरे के नीडल शेयर करने के बाद. ब्लड ट्रांसफ्यूजन. नाउ देयर इज द सिम्टम्स. व्हाट इज द सिम्टम्स इज देयर? येलो यूरिन, मतलब हमारा जो यूरिन होता है वो येलो कलर का हो जाता है. देयर इज अ वीकनेस इज देयर. वोमिटिंग, ग्रे स्टूल, मतलब आपका जो वीकनेस आता है बॉडी में, और जो हमें स्टूल होती है उसमें भी ग्रे ये हो जाता है. मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में भी. नाउ देयर इज अ प्रिवेंशन. हाउ टू प्रिवेंट दिस डिसीजेस? ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर. Why the drinking boiled water? When we drink the boiled water, that time when we boil that water, that time all the which one pathogens are there, they can die, and because of that we cannot suffer from the diseases. Now proper cleaning of hand. When you go for the washroom, otherwise if you do any work, then you have to wash your hand properly. Now there is a third one is the dysentery. Dysentery means there is a loose motion. Now bacteria, virus, देन बैक्सीली एंड हिस्टोलिटिका, ये जो पाइथन है, इसके पाइथन मतलब जो बैक्टीरियाज है, इसके कारण ये इन्फेक्शन बढ़ता है. अभी ये क्यों होता है? मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब जब हम कुछ गंदा फूड अगर सी देयर इज अ आउटसाइडर फूड, इफ वी eat outsider food, if we drink the outsider water, then we are suffer from this dysentery and loose motion. Now what is the symptoms of these diseases? There is a watery stool is there, means पानी जैसे हमारी वॉशरूम होती है. then pains in the abdomen, मतलब हमारे जो abdomen जो पार्ट है उसमें ज्यादा वॉशरूम, मतलब कम से कम 10-12 बार हम लोग वॉशरूम जाते हैं, तो इसके कारण हमारे पेट के नीचे एब्डोमेन में क्या हो जाता है, पेन होते रहता है. नाउ हाउ टू प्रिवेंट दिस डिसीजेस? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रिंक द बॉइल्ड वाटर. प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द फूड. You don't drink outside water, and you don't eat anything from the open space, otherwise on the outsider food. Now there is another one is there, chlorella. Cholera is there. What is there? Cholera.
Now there is a how this cholera is spread. What is a pathogen? Which pathogens are there? Vibrio chloria, matlab bacterium. Now what is the mode of infection? Contaminated water and water. Now what is the symptoms of these diseases? There is a vomiting, मतलब हमें उल्टी आती है, हमें बार बार डायरिया होता है, मतलब हमें लूज मोशन होती है, क्रैम्प इन द लेग्स, मतलब हमारे पैरों में गोले आते हैं, हमारे लेग्स बहुत दुखते हैं. Now how to prevent this? There is a hygienic participate, avoiding the open place food, मतलब हमें बाहर का खाना नहीं चाहिए. ड्रिंकिंग बॉइल वाटर, वैक्सीनेशन अगेंस्ट द कॉलरा, मतलब कॉलरा के हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए. नाउ देयर इज अ लास्ट वन इज देयर टाइफाइड. Which are the pathogens? There is a bacterium is there. Now there is a mode of infection, contaminated food and water. Now symptoms, what is the symptoms? Headache, मतलब सर दुखना, rash on the abdomen, dysentery, fever, हमें 104 तक fever आता है. तो हमें इसको प्रिवेंशन कैसे करना चाहिए? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर एंड वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सेवेज, मतलब जो गंदा पानी होता है उसे हमने प्रॉपरली क्या करना चाहिए, उसको properly destroy करना चाहिए. Now some infection diseases. Now there is a malaria is there, then plague is there, and AIDS is there. Now, sir, next page. Hello. Now see all of you. Now some important decisions of the present days. मतलब अभी के जो सराउंडिंग में डिसीजेस स्प्रेड हुए हैं उसमें से हमें बहुत सारे डिसीजेस इन्होंने पढ़ने के लिए दिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डेंगू इज देयर. Now how the dengue is spread everywhere. Mosquitoes lie the legs in the waterlogged place. Thereby there is a population increasing. Different species of mosquitoes spread different diseases. Dengue is spread by the Aedes aegypti. These diseases is caused by dengue 1, 4 virus belong to types of the flavi virus. मतलब हमें अभी समझ में आ रहा है. देखो इधर पिक्चर दिया है. देयर इज सो मच टायर्स आर देयर, 2 tires are there, and in that tire the what happened, there is a water is store, which one, the rainy water is store in that tire for 2 to 4 months, and there is a mosquitoes are lie their eggs, and they live there, and from that some mosquitoes are come, and when they means come in the when they come and in our home, and they directly touch on our skin, that time they directly spread that dengue diseases in our body also. मतलब हमारे बॉडी में क्या करते हैं वो जो डेंगू के जो बैक्टीरियाज है वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं. अभी सिम्टम्स क्या होते हैं इसको, इसके सिम्टम्स होते हैं एक्यूट फीवर एंड हेडेक, वोमिटिंग. एक्यूट फीवर है, एक्यूट फीवर मतलब बहुत एक 15-20 का दिन का फीवर आ जाता है, हेडेक हो जाता है, वोमिटिंग होता है, पेन इन द आई सॉकेट इन द वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम्स, मतलब आंखों में भी वो दर्द होने लगता है. डिसीजेस इन द डिक्रीजेस इन द प्लेटलेट्स काउंट दैट में लीड टू द इंटरनल हेमोरेज. मतलब है ना, हमारे जो प्लेटलेट्स रहते हैं ना वो डिक्रीज हो जाते हैं. अगर हमारे प्लेटलेट 25 या 30,000 के नीचे आ जाते, then we are die, because that platelets are so important in our body, because that platelets are protect our body from their harmful bacteria. Now there is another one diseases is there, swine flu is there. Now malaria is there. Malaria, how the malaria is spread by the female anopheles, while the elephantiasis by the female aculeates, anopheles and adens grow in the clean water, while the culex in dirty sewage water. मतलब जो है ना ये जो मलेरिया का भी जो डिसीज स्प्रेड होता है ना, वो भी एनोफिलिस नाम की जो ये मॉस्किटोज है वो काटने के बाद ही लोगों को मलेरिया का भी प्रॉब्लम हो जाता है. Now there is another one diseases is there, swine flu.
रीजन ऑफ इन्फेक्शन, ये कैसे होता है? इन्फेक्शन फॉर द स्वाइन फ्लू एक्टिव थ्रू द पिग्स एंड ह्यूमंस। मतलब ये स्वाइन, स्वाइन के नाम के ऊपर ही आपको समझ में आएगा, स्वाइन मतलब डुक्कर। तो ये जो स्वाइन रहते हैं ना, उनमें ये ना स्वाइन फ्लू के ना बैक्टीरिया रहते हैं। वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू द सिक्रीशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। सेम हमारे जो बॉडी में जो वायरस जाता है स्वाइन फ्लू का, वो हमें नाक से, मुंह से और सलाइवा, मतलब कोई अगर थूकता है तो उसके उसमें जो जो पैथोजन रहते हैं वो हमारे बॉडी में गए तो जो हेल्दी पीपल है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। नाउ व्हाट इज द सिम्टम्स आर देयर? डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, सोर थ्रोट एंड बॉडी पेन, मतलब हमारे ब्रीदिंग में ना प्रॉब्लम हो जाता है, और सोर थ्रोट मतलब गला सूख जाता है, दुखने लगता है, और बॉडी पेन, हमारे पूरे बॉडी में क्या हो जाता है, पेन हो जाता है। अभी डायग्नोसिस ऑफ द स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू इज ऑल्सो, मतलब स्वाइन फ्लू से भी बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में क्या हुए थे, डेथ हुई थी। अभी स्वाइन फ्लू के ऊपर वैक्सीनेशन है। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द स्वाइन फ्लू, लिक्विड फ्रॉम द थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट इन द लेबोरेटरी। मतलब स्वाइन फ्लू कैसे होता है, स्वाइन फ्लू किसको हुआ है, ये देखने के लिए जो पेशेंट है उसके मुंह से वो सलाइवा टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में दिया जाता है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, मतलब NIV इन पुणे एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस इन दिल्ली। मतलब पुणे और दिल्ली में इसके सेंटर्स है जिधर ये स्वाइन फ्लू टेस्ट किया जाता है। और उसको ही स्वाइन फ्लू को ही बाद में नाम क्या दिया गया, H1N1। Understand? And this swine flu is spread because of the pigs. Now there is a AIDS is there. AIDS means HIV is there. Now acquired immunodeficiency syndrome. अभी ये जो AIDS है वो this one is spread because of the means infected person when we come sexually this because of sexually these diseases are spread everywhere. Now these diseases is caused by the HIV. In these diseases, victims suffer from various diseases due to the progressive weakness of the natural immunity. अभी ये जो डिसीजेस होता है ना जिसको एड्स, तो उसका जो इम्यूनिटी पावर है ना वो बहुत कम रहता है, और वो दिन के दिन कम होते जाता है, और उसको डायरिया मतलब उसको लूज मोशन पूरा लगता है, तो वो कभी बंद नहीं होता है। सर्दी हुआ तो वो बंद कम नहीं होता है। मतलब उसका इम्यूनिटी पावर इतना नाजुक रहता है कि उसको तुरंत तो कौन सा भी डिसीजेस हो जाता है। डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कंफर्म विदाउट द टेस्ट इन द मेडिकल लैबोरेटरी। मतलब इसका टेस्ट करने के लिए इसका टेस्ट रहता है, उससे ये सिम्टम्स मतलब ये एड्स हुआ है कि नहीं ये मालूम पड़ जाता है। नाउ HIV was first reported in African species of monkeys। मतलब ये HIV जो हुआ था ये हमें अफ्रीकन स्पेसीज जो मंकी है उनसे वो मालूम पड़ता है कि ये HIV कैसे हुआ था। According to the National AIDS Control Program, 80 to 85 HIV infection in the India occur through the unsafe sexual contact। मतलब because when some persons are there, they don't take the precaution in the sexual contact, that time the HIV is spread। Now there is an infection through the animal। How the infection is through the animals? मतलब हमारे बैक्टीरिया से ही नहीं तो एनिमल से भी कोई कोई डिसीजेस स्प्रेड होते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्प्रेड जो है वो रेबीज है। नाउ व्हाट इज द रेबीज इज देयर? रेबीज ये जो डिसीजेस है वो ज्यादा करके जब व्हेन डॉग्स जब बाइट करते हैं उससे ही वो स्प्रेड होता है। सर नेक्स्ट पेज। हाँ, now rabies, this is a viral disease. It occurred due to the bite of the infected dog. Means if someone dogs are there and he infected by the rabies, then when that
a dog is bite to another one person, then that person is also infected by the rabies. Now there is a only not dog, on rabbit is there, monkey is there, cat is there. Means there is a so much different types of animals are there. If they bite na to any person, then they also, मतलब उनको अगर हुआ है तो ही उस आदमी को भी वो रेबीज हो सकता है. वायरस इंटर द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन्स जो नर्वस सिस्टम से, उससे वो वायरस क्या हो जाता है, ब्रेन तक चला जाता है. हाइड्रोफोबिया is one of the important symptoms of these diseases. In this case, the victim show the extreme fear for the water. मतलब उसको है ना, रेबीज इज फैटल डिसीजेस, मतलब ये फैटल डिसीजेस है. However, the fatality can be prevented by the timely vaccination. मतलब ये जो डिसीजेस है ना, ये इलाज हो सकता है इसके ऊपर, लेकिन उसको प्रॉपरली वैक्सीनेशन लेना पड़ता है. Now, before the onset of symptoms start to appearing within the 19 to 175 days of the dog bite. अगर आपने जब डॉग काटता है तो तुरंत आपने वो वैक्सीनेशन नहीं लिया, तो आपको 19 टू 175 डेज में आपको वो सिम्टम्स क्या होते हैं, दिखाई देते हैं. व्हाट इज द सिम्टम्स आर देयर इन द रेबीज? नाउ देयर इज अ फीवर फॉर 2 to 12 weeks. नाउ एक्सजेनेटिंग इन बिहेवियर, हाइड्रोफोबिया, मतलब आपका जो बिहेवियर वो चेंज हो जाता है. यू ऑल्सो यू ऑल्सो डिड सम थिंग्स लाइक अ डॉग, मतलब आप भी वो डॉग जैसे ही करने लगते हो. Now there is a non-infectious diseases is there. Diseases which do not occur through the infection and body contact are called the non-infectious diseases. मतलब जो diseases कोई भी बॉडी कांटेक्ट से और थ्रू द इन्फेक्शन से नहीं होता है, उससे ही क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस. Such diseases arise in human body itself due to the certain reason. मतलब ये डिसीजेस क्या होते हैं, वो कुछ ना कुछ रीजंस के कारण वो आदमी के बॉडी में आ जाते हैं. Now there is a first one is the cancer. Uncontrolled and abnormal cells growth in the called is a cancer. Group or lump of the cancerous cell is called a malignant tumor. Cancer can occur in various organs like lungs, mouth, tongue, stomach, breast, urethra, skin and tissues like a blood. मतलब ये सब जितने भी ऑर्गन्स है उन सब का अलग अलग कैंसर्स होता है. There is a lung cancer is there, mouth cancer is there, tongue is there, stomach, breast, urethra, skin and tissue like a blood. Now there is a reason why this happened. Consumption of the tobacco, gutka, smoking, alcoholism, lack of the fiber content in the food. मतलब ये सब होता है, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, और जो फाइब्रस फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल नहीं खाते, इनके कारण ये डिसीजेस स्प्रेड होते हैं. Excessive consumption of the junk food like a pizza and burger, those are it. They cannot get that proper vitamins. That's why they are suffer from these cancer diseases. Are some of the many possible reason. Heredity may be also be reason. मतलब कोई कभी कभी ये हेरिडिटी भी रीजन हो सकता है. Now symptoms. Chronic cough. What is a chronic cough is there? Horsewise, difficulty in swallowing, incurable scare and inflammation, lumps in the breast. Now unexplained weight loss, मतलब आपका weight loss होने लगता है. This ones are the symptoms are there in the cancer. Now there is a modern diagnostic and treatment of the 1 minute sir, downside. मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए क्या वेरियस टेक्निक्स आर सीटी स्कैन्स, एमआरआई स्कैन, मैमोग्राफी इज देयर, बायोस्पाई आर यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. मतलब कैंसर देखने के लिए ये सब सारी चीजें किया जाता है, मतलब कैंसर को डायग्नोसिस करने के लिए. इन केस ऑफ ट्रीटमेंट अलोंग द कन्वेंशनल मेथड like a chromotherapy,
radiation therapy and surgery. Modern techniques like a robotic and laparoscopic surgery are also follow. मतलब ये सब surgeries follow किया जाता है. Now there is an uncontrolled diet help to prevent some types of cancer. Physical exercise along with the modern treatment is more beneficial to cure the cancer. मतलब modern treatment से cancer को कम किया जा सकता है. क्योर नहीं किया जाता है सकता है लेकिन कम किया जा सकता है. Now there is the last one, next one, diseases is there diabetes. Now diabetes is there. See, the hormone insulation produced in the pancreas control the level of the sugar glucose in the blood. मतलब जो शुगर लेवल होता है ना वो प्रॉपरली नहीं होता है, तो इसके कारण हमें क्या करना पड़ता है. नेचुरली जो इंसुलिन होते हैं ना वो हमारे बॉडी में नहीं रहते, इसलिए हमें वो इंसुलेशन इससे इंजेक्शन से लेना पड़ता है. इफ द इंसुलेशन इज सीक्रेट इन द लो क्वालिटी ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल. मतलब इंसुलेशन के कारण ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो कंट्रोल नहीं होता है, और उससे ही क्या होता है डायबिटीज हो जाता है. अभी डायबिटीज मतलब क्या, तो डायबिटीज में क्या होता है, इन डायबिटीज इफ समवन पर्सन एक्सीडेंट इज देयर then their wants, otherwise their which one part is na cut that not recover very soonly. मतलब वो तुरंत रिकवर नहीं होता है, and so much water is come from that कटिंग पार्ट. मतलब जो कट हुआ पार्ट होता है उसमें से बहुत सा पानी आने लगता है, मतलब वो जख्म सूखती नहीं उसकी. सिम्टम विच कैन नॉट बी इग्नोर. फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन एट द नाइट. नाइट के टाइम फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है. इंक्रीजिंग obesity एंड वेट लॉस. रीजन फॉर द डायबिटीज हेरिडिटी. मतलब ये हेरिडिटी है, मतलब आपके पूर्वजों से, माँ बाप से भी हमें ये डायबिटीज हो सकता है, मतलब वो हेरिडिटी मिलता है. ऑब्सेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. मतलब हमें हमारी जो एक्सरसाइज कम होती है इसके कारण हमें वो हो सकता है. मेंटल स्ट्रेस, मतलब हमारे दिमाग के ऊपर अगर ज्यादा स्ट्रेस रहेगा काम का तो भी ये डिसीजेस हो सकता है. Now there is a heart diseases is there. Efficiency of the heart decrease due to the decrease the blood supply, and thereby the oxygen and nutrients supply to the heart muscles. Due to this the heart has to perform more work that lead to the stress on it. This may cause the heart attack. मतलब हार्ट के ऊपर जब प्रेशर आता है तब क्या होता है, हार्ट को ज्यादा प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होता है, और जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई का जो हार्ट का जो मसल्स होता है वो डैमेज हो जाते हैं. तो तब हमें हमारा हार्ट क्या करना पड़ता है, हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है और इसके कारण ही हार्ट अटैक आता है. और वो सडनली दैट हार्ट इज स्टॉप. मतलब वो हार्ट क्या हो जाता है, चलना बंद हो जाता है. इसके कारण ही हार्ट अटैक से तुरंत आदमी की मौत होती है. इफ समवन हैज a heart attack, immediate consultation